वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का दिन एक टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने आए हैं और ये टॉपिक्स है एसआईपी के बारे में। 16 मार्च को 2023 में एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया था, वहाँ पर लिखा था 14.3 लाख इन्वेस्टर्स स्टॉप कर दिया, उनका एसआईपी अकाउंट क्लोज कर दिया और स्टॉप कर दिया। तो इसी के बारे में तो इसी से गेस कर सकते हैं हम कि अभी तक इन्वेस्टर के अंदर कितना अनअवेयरनेस है, कितना उन लोग एसआईपी के बारे में नहीं जानते, रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इन लोगों ने स्टॉप कर दिया। और ठीक किया या नहीं ठीक किया, ये सब लेके ही आज के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इज़ इट बेटर और नो? तो फ्रेंड, इन लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या है और वाई एसआईपी इज़ रिक्वायर्ड, इसका रिटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, इससे तो बैंक में एफडी करते अच्छा होता, कैपिटल लॉस तो नहीं होता ना। इसके साथ साथ इमीडिएटली इन्वेस्ट किया, 1 ईयर्स हो गया, ये नहीं हुआ, अभी उन लोगों का मनी की ज़रूरत पड़ गया, तो इसीलिए इन लोगों ने इनकैश करने के लिए रेडी भी हो गए। So for this reason, a lot of people, investors are already withdrawing amount from his mutual funds, and कुछ लोगों ने ask किया कि should I stop the SIP for the last 1 year my investment through SIP is negative capital, is it better to open a FD or post office which SIP। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा है, उन लोगों का क्वेश्चन भी है कि which SIP is best। तो कुछ क्या SIP करना चाहिए और लमसम which one is best। कुछ ऐसे भी बोल रहा है कि इज़ इट रियली पॉसिबल, कैन एक्यूमुलेट ए ह्यूज मनी थ्रू एसआईपी, और एसआईपी कैलकुलेशन क्या है, ये सब लेकर ही आज का दिन है। तो देख ही लेते हैं। तो जो न्यूज़ आया था वो न्यूज़ का छोटा सा कटिंग है। सो कटिंग में मैंने यहाँ पर लिखा है, मीनवाइल 14.3 लाख एसआईपी अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन फरवरी 2023। अब इसका क्या रीज़न है और अराउंड यहाँ पर लिखा है, द एसआईपी स्टॉपेज रेशियो रोज टू ए 27-month हाई ऑफ 0.68 इन फरवरी। अब जो लास्ट मार्च मंथ का जो डेटा आया है वो फरवरी मंथ का है, और इस फरवरी मंथ में ये लिखा एक महीने के अंदर 14.3 लाख एसआईपी अकाउंट वर क्लोज्ड। सो बात यह है कि लास्ट 1 ईयर से निफ्टी में भी डाउनफॉल है, 2% से ज़्यादा, सेंसेक्स में भी डाउनफॉल है। तो नेचुरली म्यूचुअल फंड में भी डाउनफॉल होगा, और इसका रीज़न से ही शायद कैपिटल में लॉस हो सकता है। तो एक पहले जान लेते हैं एक छोटा सा स्टोरी के साथ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और क्यों इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर 2 फ्रेंड है, अजय एंड विजय, सेम एज का है और सेम कंपनी में उन लोगों ने कंपनी ज्वाइन किया, उन लोग सैलरी भी सेम है। सो अजय ने क्या किया, वो सैलरी से स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, और जितने सारे स्पेंड करना है, डिफरेंट एंजॉयमेंट किया, आईफोन ख़रीदा और बाकी सब ह्यूज एक्सपेंसिव मटेरियल इंक्लूडिंग शॉपिंग किया, 5 स्टार होटल पे गए और ऐसे कुछ खर्चे किए, प्रिसाइज हैंड वॉच, रिस्ट वॉच लिया और परचेज़ किया एक्सपेंसिव फ्लैट एंड और इसके साथ साथ कॉस्टली कार ख़रीदा। ये सब से लेकर एट द एज ऑफ 50 ही इज़ नॉट एबल टू सेव एनीथिंग except his provident fund, because he already lost everything through, and he also purchased EMI is used, and for the reasons he not able to all the loan burden is already give him a lot of pressure on himself. And other side Vijay was from the first day he started through some investment process. So though he also enjoy his life, he also purchased some phone, but not high iPhone, but rather he used budgeted phone, everything, and he also continuously doing his investment through SIP. And the age of 50, दोनों का एज जब 50 हुआ तो देखा एक अजय ने उनका पूरा अमाउंट खर्च हो गया और EMI में चले गए, लेकिन विजय के पास
वहाँ पर उनका ढेर सारे इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए ही इज़ नाउ इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ एज लेविशली. सो यहाँ पर एक नॉलेज के लिए एग्जांपल दिया हुआ है, because everyone is required to invest. So if without investing it's not possible to gain a lot of money. So naturally it is must for everyone. So यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट. व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इज देयर. वन इज अ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, अनदर इज डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट. yes, of course you should have some defensive investment also, like cash, fixed interest, a bank FD, MIS, post office. बेसिकली फ्रेंड्स, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है. एक तो है डिफेंसिव. डिफेंस में क्यों होता है? क्योंकि अब जो क्वेश्चन था वहाँ पर एक कस्टमर, एक पर्सन ने मुझे बताया कि अभी मुझे कैश का ज़रूरत पड़ गया है. इन लोगों ने लास्ट 1 ईयर, ओनली 1 ईयर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया. 1 ईयर के अंदर ही इन लोगों को कैश का ज़रूरत पड़ गया. तो इमीडिएटली क्या होगा? This type of stocks, those are the growth stocks like mutual funds, equity funds. You should have to invest in on continuously process, and you should minimum 5 to 10 years is the minimum time for long term it's called. And this time this is a must. Without this आप कुछ नहीं कर सकते. So first of all you should have to invest on to 5 years. And here defensive purpose जो suppose some contingency reason, कुछ ज़रूरत पड़ गया, मेडिकल इमरजेंसी और एजुकेशन पर्पस और समथिंग इफ रिक्वायर, इन दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड इन्वेस्ट इन बैंक और बैंक एफडी, MIS, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड, PPF, no not PPF, bond or cash. These are the defensive statement. Or in second way, this is growth investment where you invest in mutual funds, stocks or real estate. And in that growth investment you should have to give a long time. Next come to the what is SIP. SIP basically the full form is SIP, Systematic Investment Plan, and it is a kind of investment scheme offered by mutual fund companies. Using SIP one can invest small amount periodically, weekly, monthly, quarterly into a selected mutual fund. And for retail investor, SIP offer a well disciplined and passive approach to investing to create wealth in long term and using the power of compounding. Since the amount is invested on a regular interval, usually monthly basis, it also reduces the impact of market volatility. So this is the overall of SIP. And it is a systematic investment plan, and every day systematic way you should have to invest like monthly, and then you have to invest disciplinary, so naturally for long term basis. So naturally power of compounding is used here, and also the market volatility is used. Suppose what is the market volatility? आप जो अभी जो सिचुएशन है फॉर द लास्ट 1 ईयर, मार्केट मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, मार्केट डाउन होते जा रहा है कंटिन्यूसली, एंड दिस टाइम इफ़ यू इन्वेस्ट समथिंग, that the value of that investment would be higher. Here is a NAV type of things. The unit is there in mutual funds. Suppose when the market is up, that means 1 unit equal to, say just for example 10 rupee, and when the market is down, so you will get more unit because the value of 1 unit is come to 5. That means when you purchased 10, that means when the market is up you all get only 1 unit, but when the market is down, that time you get 2 unit because now the 1 unit value is 5. So this is a net asset value. This is called NAV, and that this time you will get more unit. So naturally it's a positive part, and there is the 5 benefits of systematic investment plan. One is what I said, lighter on the wallet. तो आपने इन्वेस्ट कर 1000 रुपीज़ से 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. नंबर 2 है मार्केट टाइमिंग, मेक्स मार्केट टाइमिंग इररिलेवेंट. मतलब है कि इस मार्केट टाइमिंग के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. एंड नंबर 3 इज़ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है. जितना भी यूनिट, जितना मार्केट डाउन होते जा रहा है उतना ही आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, और जब यूनिट मार्केट अप है तो आपको यूनिट कम मिल रहा है. तो इट इज़ कॉल्ड द एवरेजिंग. दैट मीन्स इफ समवन इन्वेस्टेड इन दैट मोमेंट, that means he will get, say just for example one time he get 100 units, just for example. Now it is 5 unit, 200 unit he got. But after some time if the market fall more,
दैट टाइम SIPs आर गेटिंग मोर पॉजिटिव। कि इन लोगों के पास क्या होता है, अभी जो मार्केट डाउन होते जा रहा है, अभी आपको जो अमाउंट मिल रहा है और आपको जो यूनिट मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम कल जब मार्केट और भी डाउन होगा तब क्या होगा, आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा। सो आप क्या करते हैं, आज का दिन 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, कल का दिन 1000 किया, तो परसों 1000 किया। तो इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन मार्केट डाउन होते जा रहा है और आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन समवन इज़ इन्वेस्टेड एज ए लम सम, he only get a lump sum amounts, a lump sum unit, but if the market is down, after that he will not get that benefited. Next come to the point, and why SIP is important for wealth creation. I already told you SIP brings more discipline. Next is you can start with small amount. Number 3 क्या है, is don't stress टाइमिंग द मार्केट। आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट कल क्या होगा ऐसे कोई ये नहीं है। grab the benefit of compounding, as a compounding is only possible when you invest in a long run. इन लोग जो पीपल्स न्यूज़ में आया है, इन लोग 1 और 2 वर्ष के लिए इन्वेस्टेड हुआ था और अभी इन लोगों का कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो एग्जिट हो गया है। इन लोग बहुत ही ख़राब काम किया, ठीक नहीं है। सो दे विल नॉट गेट द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सो दे कैन नॉट बिलीव ऑल्सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ। बट is there, if someone is there who is trying to invest presently, but he can do this opportunity now, and friend, this is the opportunity what I'm telling you. If you want to invest here immediately SIP mode, you will get benefited in future, then no doubt about it. Now you can stop anytime you want, आप स्टॉप कर सकते हैं एनी टाइम, आपको स्किप कर सकते हैं फंड्स। इफ़ यू हैव ए इमरजेंसी मनी रिक्वायरमेंट यू कैन स्किप। एंड नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू हैव एक्सेस मनी यू कैन इन्वेस्ट मोर। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट मिक्सड इन्वेस्ट विद इमोशंस। you continuously you are investing, so naturally you don't have to any emotions on that part, whether it is a market down or market up. Next is a past performance. Past performance is another big point. If you started a SIP of rupees 3,000 per month in HDFC Top 200 in 1999, in a 15-year period you would have spent a total of around 5.4 lakhs. At the same time your investment would be worth almost hoping 35 lakh. So naturally this is the difference. Now come to the next point, why SIP is important for wealth creation. SIP plans are one of the safest and most convenient way to invest in the equity markets of India through mutual funds. Next, what I already told you, the benefits of SIP: disciplined investment which should be done consistently over a period of time. Next is may diversify portfolio. Different type of mutual funds are there, so आपका as per requirement you can change, like लार्ज कैप है, मिड कैप टाइप ऑफ है, थीमेटिक टाइप ऑफ है, कुछ है IT बेसिस है, कुछ है फॉरेन बेसिस है, कुछ है डेप्ट फंड है। सो यू मे डाइवर्सिफाई। डेप्ट फंड से साथ क्या डिफरेंस है, डेप्ट फंड में क्या होता है, डेप्ट फंड में अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम मिलता है, जैसे कि बैंक का FD के जैसे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये आप एनी टाइम यू कैन विथड्रॉ इट. There is no problem for that reason. Few people who are consistent basis, who are they don't like risk, they can invest in debt. Now compounding का benefit आपको मिलेगा. Next क्या है, start investing at an early stage of life. आपको पहले लाइफ में से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए. यहाँ पर जो काम किया विजय ने, वही मैं बोलना चाहता हूँ. And what is the difference SIP or lump sum? Here is basically SIP is beginner friendly है. Yes, most fund houses and mutual fund aggregators support automated deduction of monthly installment via the bank. mandate रहता है, इसका mandate से ले लेता है. lump sum में इस तरह का डिफ़िकल्टीज नहीं है. ये क्या है, एक साथ इन्वेस्ट होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, you need to carefully research and pick the mutual fund before going to lump sum, as there is less room for any error. तो बात यह है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है लम सम के लिए, बिकॉज इफ़ यू इन्वेस्टेड ऑल वन टाइम देन देयर इज़ नो ऑप्शन टू रिवर्ट बैक और वेट फॉर समथिंग. नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी. वेरी फ्लेक्सिबल है SIP के, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के वेरी फ्लेक्सिबल. यू कैन स्टार्ट ए लो ऑफ ₹1,000 पर मंथ एंड यू कैन ईजिली स्विच टू हायर अमाउंट डिपेंडिंग द लिमिट सेट बाय द बैंक मैंडेट or to another fund as required.
बट लमसम के कहते ये नहीं होता है, देयर इज़ नो लिमिट और रेस्ट्रिक्शन neither, but if you already invested all the amount in one go, you cannot switch to another fund easily. You will have to withdraw first and move funds back to another fund. And number 3 is volatility and risk. In case of SIP, funds are invested at regular intervals, weekly, monthly, etc. So the investor benefit from the dollar cost average. It somewhat reduce the rupee cost average, same thing, it somewhat reduce the time risk associated with that investment and the portfolio appear less volatile. बात यह है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस की वीकली बेसिस, तो आपके पास रूपी कॉस्ट एवरेज का फैसिलिटी रहता है. क्या है कि रूपी कॉस्ट का एक ही बात है कि हर महीने आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो नेचुरली यू डोंट हैव टू बी टेकिंग एनी रिस्क ऑफ फर्दर मार्केट डाउन. But in case of lump sum, if already invested full amount, if the market is down, you don't have any money to invest second time. Next point आ जाते हैं बेनिफिट ऐसा पे कंपेयर टू लम्प सम. मैंने जो बोला, you don't need to speculate or focus on timing the market. Amount is invested on monthly basis. Sorry, amount is invested on monthly basis, so there is little or no impact market volatility. Passive and automated हो जाता है. It is very flexible. You can create, update, cancel SIP anytime. Most of the funds start as low as 1000 per month. So friends, अभी आया है यहाँ पर SIP कैलकुलेटर के ऊपर और यहाँ पर दिख रहा है एग्जाम्पल लिया है. एक 1000 रुपीज़ 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड किया तो 15% रिटर्न CAGR मिलने वाला है. इससे ज़्यादा ही मिलता है 25, 22. मैंने कम करके जस्ट फॉर एग्जांपल 15 किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है कि 10 भी हो जाए, 8 भी हो जाए. सो एवरेजली 15%. So calculated, then 1000 rupees per month is calculated. Expected amount should be 15,15,955. So this is the amount. Wealth creation is 12.75 lakh. Hence the break is there. 20 years. If you invested 1000 rupees, you will get 15.2. But if you use it 12 year, you will get 4 lakhs. And if you invested in 18 year, you will get 11 year. But if you invested in 30 years, you will get 70.1 lakh. And if you invest 35 years, 1000 rupees, you will get 1.5 crores. नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल 2 के ऊपर. यहाँ पर है 5000 रुपीज़ का SIP किया है. सेम ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड है 20 ईयर और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है 15%. तो आपको जो 5000 रुपीज़ अमाउंट SIP होने वाला है, इससे आपको मिलेगा अराउंड 75.8 लाख. और इफ़ यू इन्वेस्ट इन 35 ईयर्स और रुपीज़ 5000, यू विल गेट 7.4 करोड़. नेक्स्ट आ जाता है why SIP is must for wealth generation. Number 1 is short run your capital may be negative, but long run excellent choice, best instrument to generate wealth. Number 3 है ये इन्फ्लेशन को बीट करते हैं. Number 4 क्या है, ये बेस्ट चॉइस फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट. दिस इज अनदर वेरी वाइटल पॉइंट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट थ्रू SIP. because a lot of investors, those who don't have a knowledge about share market, so those people can easily invest in mutual fund through SIP, and there are fund managers are there in as mutual funds. Those will be handle all the risks, and they will do all the changes, fund changes. Anytime they will shift their stocks from one to another. If this particular stock is not performing well, the fund manager is can change that particular stocks and exchange with another stock, and this way they can do all your risk. They will take the risk of your part. This is a great choice. And next two is when we calculate the SIP, we use assume 15% CAGR. What I already told you, it may be 24 or 6. It is averaging. A patience is a must. You should have must be patient, and rupee cost averaging and disciplined investment without having to worry about the market volatility make you really rich. Now the most important question is which one is good, which mutual fund is good. There is a lot of mutual fund is there, lots, and naturally it is really very tough to say which one is good. But first of all, as an investor, you should have to mind that I have to go through SIP. If you have a money a lot, then you invest one time lump sum, but
विद दैट ऑल्सो, उसके साथ साथ आप एसआईपी भी कर सकते हैं। अब एसआईपी करने के लिए आपको बहुत सारे आपका पास ऑप्शंस है, बट व्हाट एनी जो भी आपका म्यूचुअल फंड जो एएमसी आप चूज़ करेंगे से वो तो आपका ही बात है, वो एनी टाइम यू कैन चूज़ एनी वन, बट एज यू यूज़ एज ए एसआईपी मोड यू डोंट हैव टू बी मच बॉदर अबाउट इट। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट a lump sum, then you have to think, then you have to go for investment, you should have to research which fund will give you good result. Basically 3 type of funds is there. One is Indian equity, basically UTI Nifty, HDFC Index Nifty, HDFC Index Nifty 50 Growth Direct Plan, or Parak Parekh Flexi Fund. These are good funds and you will get a good result. For foreign equity you use Motilal Oswal S&P 500 index fund or Motilal Oswal Nasdaq 100. It will give you a good result, but they invested in foreign stocks, S&P or Nasdaq 500, Nasdaq 100. Next come to the debt fund. What I already told you, debt fund is less riskier fund, but return also less. इसका रिटर्न कम मिलेगा आपको, जैसे कि पराग लिक्विड फंड है, मोतीलाल ओसवाल लिक्विड ग्रोथ फंड है, क्वांटम लिक्विड फंड है, और लास्ट वन इज एचडीएफसी लिक्विड फंड। इन लोगों का जो रिटर्न है अप्रॉक्सीमेट 5.5 to 7% है एट पर बैंक्स। एंड द लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, इसके साथ एक्सिस स्मॉल कैप है, टाटा डिजिटल है, ये पूरा लिस्ट है यहाँ पर। और क्वांट स्मॉल कैप, दिस वन इज़ गुड। देखिए 5 years का रिटर्न आप 21%, 19%, एवरेज 22 इज़ मोर और लेस। यू विल गेट एक्सिस मिड कैप 15.7, और बेटर वन इज़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, इसका रिटर्न गुड है। और नहीं तो क्वांटा स्मॉल कैप, ये भी गुड है। और नेक्स्ट वन इज़ कोटक स्मॉल कैप, ये भी वन ऑफ द गुड फंड। नेक्स्ट रिस्की, थोड़ा रिस्की स्मॉल कैप है, इसका अंदर एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन लोग ये 5 years का रिटर्न सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप। So you can choose one or any one because you are going through SIP mode, so naturally you don't have too much risk. Next come to the conclusion. According to the AMFI website, अभी भी 14.3 lakh people's already closed their SIP account. That's true, but still Indian mutual funds currently have 6.28 crore SIP accounts, 6.28 crore, through which investors regularly invest in Indian mutual fund scheme. The total amount collected through SIP during February 2023 was 13,686 crores. Only February month, friends. So what I said is it's a huge amount. Naturally a lot of people are already investing through SIP, and I already advise you, SIP is a good way to generating the huge wealth, and you should invest and don't close your SIP, and be patient. And today your return may be negative, but in future, in next 5 years, you will get a good result, because the example is mine, and I also already in that negative in index I'm in positive. So naturally that means you will get if you invested in long run. The Rome was not built in a day, and Warren Buffett accumulated 90% of his fortune only after the age of 50. So naturally what I am telling to you, Rome was not built in a day. That means you have to be long run, you should have patience, and you should continue SIP with patience if possible. Increase your SIP amount or add new SIP. So अभी एक चांस है आपके लिए कि आप ऐड कर सकते हैं और न्यू SIP भी खोल सकते हैं इसको। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।